Hello and welcome to edCafe. Today we are here after a very long time and a very renovated space, with a very special guest. He is an educator, he is a technology lover, he is a traveler, and he has been doing so many things in education at such a young age that he gives me a complex. I'll go over to him for him to give us his introduction. I give you Mr. Tushar Punj. Tushar, thank you for coming to edCafe. Please tell our audience about yourself. Thank you so much. I think it's my pleasure and honor to be here with you. Coming from Himachal Pradesh, representing the state of Hills and also state of Punjab, I belong to our education group called Shri Sai Group of Institutes and Shri Sai University Palampur. Okay. I am working as the Pro-Chancellor in the university, and I'm very grateful to Apar Technologies for this great edCafe session, heart-to-heart session with the team. Pro-Chancellor at such a young age, this does not fit in our equations because at your age we were probably exploring what we had to do. How are you in this? How is this a makeshift for you? I mean, educator at this level, at this young age. Yeah. So I think I have seen, let me tell you about my family. So my family from third generation is into education. Oh, wow. So my grandfather was also a teacher. He started a small school after independence. My mom and dad also, they started this group in 1996. Oh, wow. So it's almost 27 years of imparting education to people. So with this big magnitude of people you see around, so this is the third generation which I am working in this now. So when you talk about the youngest pro, yes, I am the youngest pro-chancellor in this country, but the passion which is driving me is that because I've seen those many people who have been really worked hard and imparting knowledge at that point of the country where they needed the most. Yeah. Because I'm coming from a border state. Pathankot is very near to border. It's like 15 kilometers from there, and Palampur also is a very remote hill station. I would say it's very well connected with a lot of things, but it's still a lot of people are really working to get a good livelihood out of it. So we are touching those areas. That's a very good thing. In fact, मैंने भी कई बार ऐसा देखा है कि at locations like hilly locations where we haven't seen much of the education upliftment, but seeing you over the years, I've known you for a couple of years. Yes. And I've seen you going to various events talking about how a model institution can be, right? So this is where my first question comes to you. Okay. How you've been using technology, of course. You've been one of our clients. Thank you for that. But using technology in your day-to-day activities within the institution, right? इससे आपके workload पे क्या change आया? I think ये जो मेरा concept, like technology से जो concept है मेरा, the vision was very clear from the start कि मुझे एक ऐसा institute design करना है कि जो मैं scalable model बनाऊँ, कि मेरे बच्चे चाहे मेरे पास 30 हैं या 3000 हैं या 30,000 हों, मुझे उन बच्चों को सेम लेवल ऑफ क्वालिटी देनी है उनकी टीचिंग के लिए. वो मैं तब तक नहीं कर पाऊंगा unless or until I switch to technology. And I did my masters from UK, and then I did my undergrad from Dubai. So what I've learned from all these big universities which were there, they're heavily using technology in almost everything, like right from getting admissions to post alumni things. True. So that was the idea behind कि अब करना है. And absolutely. India being such a market, you really need to improvise your operations, and without technology I don't think we can actually break through.
and because when the right decision you cannot take when you don't have the right data. So technology helps me to bring that layering of data at a point when I can actually make an impact. So because I am very well prepared about the forecast, I'm very well prepared about the risk perceptions, I'm very I get an overview, I would say, through your product which we are using. So it's really making my life easy since from a couple of months now. आपके इस statement को हम अपनी marketing pitch पे लिख लेंगे. Yeah, you can. This is exactly what we Yes. want. Okay. This is exactly what we want our solution to provide, and any other solution as well to provide to the institutions. और technology, you're right. Yeah, अगर आप एक world class level पे पहुंचना चाहते हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि एक scalable solution दें अपने students को, जो कि चाहे वो 30 बच्चों के लिए हो, चाहे वो 30,000 बच्चों के लिए हो, मगर वो बिल्कुल स्टैंडर्ड होगा. Yes. वो standardization will come only with technology. You're right. You've been using technology. हमसे पहले भी आप यूज कर रहे थे, हमारे बाद भी आप यूज करेंगे. You talk to so many big players in the market. You talk to so many technology giants every day. What is the next thing जो आपको लगता है कि institutional technology में है, जो कि आपको लगता है कि अब अगला change लेकर आएगी? I think जो अभी last since I have been working, what I've seen is every process is getting digitalized now. Every edtech company, you think of any problem, there's an edtech company which is going to offer you a solution. Okay, we are giving you this solution. But now every process is getting digitalized. The communication between these processes is still missing. Not every company could provide you an end-to-end solution. Right. Where you can, that company can help you in lead management also. They can also convert into a funnel, how we use in marketing term. Then admissions, registrations, teaching. एक 360 degree approach. I think वो चीजें जो लेके आएंगे, because a lot of companies have changed their strategy also. From a single product, they are going to multi-level products. I think this communication आपस में processes का बहुत help करेगा हमें. तो I am looking कि ऐसा कोई मुझे मिले कि जो मुझे end-to-end solutions एक जगह पे दे, ताकि हमारा जो mundane work है, we give it to technology, we get focused deep dive into classroom में पढ़ा कैसे रहे हैं, research कितना कर रहे हैं, जो हमारा काम है, तो वो हम उस पे focus करें, not the mundane and the regular work जो हम लोग technology दे सकते. But do you think कि AI, हम AI की बात कर रहे हैं, हर जगह AI की बात हो रही है, घरों में भी AI की बात हो रही है, आजकल खाना बनाने के लिए भी AI की बात हो रही है. तो क्या AI एक गेम चेंजर है इंस्टीट्यूशनल टेक्नोलॉजी में, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट में? I think hands down AI will change the market. I was speaking to one of my very close mentors in Mumbai. So what he told me was, I will also share it with you. उन्होंने कहा कि this is happening in this industry. So he told me that Tushar, change is mandatory, survival is optional. कि अगर आपको मार्केट में रहना है, तो you have to adapt this change. Right? We should use AI as a tool. A teacher, a human should use AI to interact with humans. Right. It should not be like that a human replacing AI replacing humans and then teaching humans. Yeah. That would never happen because AI में empathy नहीं है, social awareness नहीं है, values नहीं है, और वही है जो आपको सिखा हुआ है. So जितना model we can train, I think again मैं टेक्नोलॉजी और AI का भी मैं बोल रहा हूँ कि जो काम आज से 10 साल 15 साल पहले एक डेवलपर के लिए बहुत टफ था, अब वो बहुत easy है because data sets already available हैं, use case पहले पड़े हैं, you just need to plug and play a lot of things. So जो 10-15 साल पहले easy था, so this generation is going to build on this next work thanks to AI. So I think this is a game changer. Right. I mean, I also feel कि AI और human impact has to be hand in hand. अकेले कोई भी काम नहीं कर. There have been a lot of, but just tell me yes or no. Will AI replace teachers in the coming future? Do you believe that? I think yes. Well, in some point of time it will, but you cannot say 100%. Like teachers will be
taking a back seat for lot of things like small queries for assignments. Chatbots can do their work, and if you can get that query, okay, this is not being, student is not satisfied, then teachers has to come. So in a way, it will act as a support system. I don't think they're going to 100% replace. They won't. Makes sense. ठीक है, टेक्नोलॉजी की हमने काफी बात करी, बट आप एक एजुकेटर हैं, आप एक रेप्यूटेड कॉलेज चलाते हैं, आपके पास अपनी एक यूनिवर्सिटी है, इतने सारे बच्चे हैं आपके साथ, और कॉलेज में अगर कोई बच्चा आ रहा है तो एक सिंगल मोटिव से आता है कि आफ्टर कॉलेज ही हैज अ सस्टेनेबल करियर, राइट? माय नेक्स्ट क्वेश्चन, probably the last question to you would be, what exactly are you doing towards the employability of those students? I think बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा गणेश जी कि हम लोग क्या कर रहे हैं सर जो अलग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सक्सेस स्टोरीज तो हम बना रहे हैं लिटरली। जो बच्चे बहुत गाँव से आ रहे हैं या ऐसी जगहों से आ रहे हैं जिनका आई थिंक मंथली एनुअल इनकम बोलेंगे काफ़ी घरों की बहुत कम है, तो वहाँ पे जो बच्चों का जो सपना है, बिकॉज एनी पेरेंट हु इज पेइंग सो मच फीस, उनको होता है कि हमारा बच्चा अच्छा पढ़ ले और अच्छी जॉब करे, तो द अमाउंट ऑफ प्रेशर विच आई टेकन एज अ पॉजिटिव प्रेशर कि कुछ ऐसा करना चाहिए कि उनके सपनों को साकार करने का मेरा काम होना चाहिए। तो उसमें मुझे कभी भी इनोवेशन में मैं 3-4 चीज़ों पर बहुत काम करता हूँ कि इनोवेशन होना चाहिए, कोलैबोरेशन होना चाहिए, जो चीज़ हमारे पास नहीं है उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढा जाए, चाहे हम लोग इंडस्ट्री से टाई अप करें, कोई ऐसे प्रोग्राम्स चलाएं जो इंडस्ट्री के साथ मिलकर चलते हैं। ये चीज़ें नीड ऑफ द आवर बनने जा रही हैं। मैं आपके इस edCafe में बोल रहा हूँ कि आने वाले टाइम में वही कोर्स सक्सेसफुल होंगे जो इंडस्ट्री के साथ डायरेक्ट टाई अप करें। बिल्कुल सही। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में हम लोग आपके साथ एक प्रोग्राम आई मेरिट करके प्रोग्राम जो लॉन्च करने जा रहे हैं, वो बहुत गेम चेंज करेगा। आप देखो उसका मॉडल इतना सिंपल और ब्यूटीफुल है कि एक कंपनी जिसको उसका एक्सपर्टीज है, बच्चे जो अच्छी एस्पिरेशंस का जॉब करना चाहते हैं और उनके कंटेंट में, उनके इंटेंट में कोई कमी नहीं है, कंटेंट आप लोग देंगे और उनको ट्रेन करेंगे और उनका उस 6 महीने 1 साल के बाद ऑरा जो बदलेगा, आई थिंक वो मेजर इम्पैक्ट डालेगा। ये बात बिल्कुल सही है। एक इंडस्ट्रियल एक्सपोजर अगर बच्चे को उसके कॉलेज ड्यूरेशन में मिल जाए तो बाहर निकलने के बाद जो उसको अपस्किलिंग करनी पड़ती है वो टाइम वेस्ट नहीं होगा, वो अपने कॉलेज एजुकेशनल इयर्स में ही वो अपस्किलिंग ले लेगा, वो एनहांसमेंट्स ले लेगा और उसके बाद जब वो जाएगा तो एक जॉब रेडी। जैसे मैं एक बस एक पॉइंट और डालूंगा कि जैसे आप देखो बहुत डॉक्टर्स जो बहुत हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करते हैं, जितने भी जो MBBS MD जो कोर्सेज हैं वो हॉस्पिटल के अंदर ही चलते हैं, दे आर देयर 24/7। जितने भी जो अच्छे हॉस्पिटैलिटी जो शेफ्स वगैरह बनते हैं वो एक अच्छे होटल के साथ अंदर ही उनके बनते हैं। तो जो ट्रेनिंग्स और हमारे अगर जैसे ये जो कंप्यूटर या जो एडटेक कंपनीज हैं या टेक्नोलॉजिकल कंपनीज हैं, इनकी भी हैंड होल्डिंग अब कंपनीज को करनी पड़ेगी, क्योंकि उनका भी एक जो मोटिव पूरा है कि वो भी कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं सोसाइटी को। नहीं, इनफैक्ट इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स भी यही चाहते हैं कि हम कॉलेज लेवल पे ही बच्चों को ये ट्रेनिंग दे दें ताकि हमारे लिए भी बच्चे एक कॉस्ट इफेक्टिव भी है, प्लस बच्चों के लिए भी वक्त बचाता है एंड इट्स क्वाइट एफिशिएंट एक्चुअली। ये चीज़ तो बहुत अच्छी है। आई एम होपफुल कि डाउन द लाइन हम देखें कि बहुत सारे बच्चे आपका जो प्लेस नहीं भी हो रहे हैं डायरेक्टली किसी कंपनी के साथ, वो भी एक अच्छे करियर को अप्रोच कर सकते हैं यूजिंग योर प्रोग्राम्स एंड आई एम होपफुल टू हैव अ वेरी गुड पार्टनरशिप देयर। बट आज हमारे पास टाइम बहुत कम है, एक छोटा सा मैसेज अगर आप हमारे ऑडियंस को देना चाहें तो प्लीज व्हाट वुड दैट बी? आई थिंक जैसे बीइंग वेरी यंग इनटू दिस फील्ड, मेरा एक सबको ये मैसेज जरूर है कि जो भी करें अपने पैशन के साथ शुरू करें, क्योंकि पैशन आपको ड्राइव करेगा, जो आपको आपके व्हेन यू गो बैक टू योर रूम एट द एंड ऑफ द डे यू फील कंटेंटेड। तो दिस इज द मैसेज कि पैशन होना चाहिए और मेहनत करने से पीछे नहीं हटना। थैंक यू वेरी मच। सो आपने देखा कि पैशन और एक कंटेंटमेंट की अप्रोच कैसे एक यंग एज पे आपको एक
अच्छा एजुकेटर भी बना सकती है। अभी तक हम सोचते थे कि एजुकेटर्स बहुत सीनियर होते हैं। आई थिंक तुषार हैज चेंज दैट। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर तुषार। एक छोटा सा एक हमारा रिचुअल है जिसमें हम मग साइन करते हैं। Okay. ये बिल्कुल भी हमने किसी शो से कॉपी नहीं करा है। प्लीज साइन दिस मग। Actually 2 mugs. I think it's very personalized. Yes, we would like to give one to you. Wow. So thank you very much for coming. Thank you. Thank you very much for listening to us. Next time हम और जल्दी आएंगे, आप हमें ज़्यादा देखेंगे और भी नए बहुत यूनिक गेस्ट के साथ हम कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे इस साल। Thank you very much for joining us. Thank you. Bye bye.